What's up? Welcome to my channel. Thank you for joining me in today's video. In today's video, I'm going to talk about planning and prioritization. So before I begin, I want you guys to give a run through of what I'm going to cover in this video. So I'm going to talk about meaning of planning, meaning of prioritization, what are the benefits of planning and prioritization, and various tools and techniques on planning and prioritization like SMART technique, D4 techniques, and also when we plan there are various barriers to productivity. So I'm gonna tell you on how to overcome the barriers. So without any further ado, let's get started. So there is a conventional wisdom that if you want to get more things done, you need more time, like a person who is working for 14 to 18 hours a day is likely to be more successful than a person who works for 8 hours a day. Likewise, a student preparing for competitive exams, who studies for let's say 18 hours a day or 14 hours a day or 10 hours a day is likely to be more successful than his friend who just studies for 4 to 5 hours a day, isn't it? Overall, achieving more is directly proportional to the amount you put into the effort, isn't it? No, my dear friend, you do not need extra hours to become extraordinary. What you need is effective planning and prioritization, So, what is planning? Example, my sister Chaya, she is a single mother, she is a housewife, she have to take care of her kids, she have to do household chores, she have to go for work, and when she comes back, she feels like her head is going to explode, and she feels like she often wishes that a day which has 36 hours than 24 hours, and so the point here is we all manage to spend 24 hours, but how many of us manage to spend what we really want out of them? Not really all of us. The time slips by and then we realize that there were so many important things to be done which we couldn't do them because there was no time, So in order to do things we need to plan effectively. So planning is an organized way of living. If we plan properly, it leads to harmonize our work, it leads to better achievements of growth. So it is very important for us to plan in order to reach where we want to go. The second topic is prioritization. So what is prioritization? Let's just take an example. Let's take my father. He's a very busy manager, he have to go for work, he have to handle various meetings and hell lot of stuff, but his main priority is to give time to their children, but he's unable to do because he's caught up with various other meetings. So in this case, what he have to do, he have to prioritize things which is important for him, because his first priority is to give time to children, but he's caught up with various other meetings, he's giving time to all of those, whereas what he have to do, he have to give time which is priority to him. Overall, prioritization is giving importance to the goals which means more to you, more attention, more energy should be given to the tasks which holds higher attention, higher value. I'll be moving on to the next topic, which is benefits of planning and prioritization. If we plan properly in order, it helps us to save time, and there is no duplication of work, and it's less burden and kind of like less expense bhi lagega, and also overall it leads to various other benefits. So I urge you all to start planning and prioritizing your tasks. So the fourth point is, when we are planning, we need to manage our time also. So I'm going to talk about 5 ways on how you can manage your time. So number first one is set goals. अगर हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तभी तो हम जा पाएंगे. So for that we need to set goals. We need to set goals for our day, we need to set goals for our week, we need to set goals for our month, we need to set goals for an year, and we need to set goals for what we want after after certain years. You need to plan your future, what you're going to be, how your children are going to be, where you'll be in the next 10 years. Plan everything, write it down, jot it down, make a diary and write everything, and when you write it down, it's kind of like when you put your words into action, it's kind of like more effective. So I urge you all, start writing down your goals. The second point is schedule effectively. मतलब हम गोल तो सेट कर लेंगे, पर हम उसको शेड्यूल करना होगा कि हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे दिन में बहुत सारी चीज़ होती है जो हमें करना होता है बट हम कर नहीं पाते. उसके लिए हमें शेड्यूल करना होगा कि हम सुबह उठे तो क्या करना है, शाम तक क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है. वी नीड टू शेड्यूल इफेक्टिवली. वी कैन हैव अ टू डू लिस्ट कि गेट अप इन द मॉर्निंग, डू योर as usual routine, exercise, meditation, whatever, then make a to do list, have a diary, write down what you want in a day, whatever you want to do and how you can achieve your goal, and everything should be jotted down, so that and by the end of the day review it, whether you have achieved it or not.
So it is very important for us to schedule effectively. Number third one is prioritize. मतलब हम सेट गोल तो कर लेंगे, शेड्यूल इफेक्टिवली भी कर लेंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. थिंक अबाउट द जर्नी. इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आर यू गोना रीच दैट डेस्टिनेशन? नो, राइट? सो हमें पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं. देन ओनली वी कैन रीच इट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रायोरिटाइज इन आवर लाइफ फॉर एवरी एस्पेक्ट, एवरी मैटर इन आवर लाइफ. नंबर फोर्थ वन इज कि प्रोकास्टिनेशन. हम बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं. हम बोलते हैं कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अरे 5 मिनट बाद कर लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम देख लेता हूँ. आई पर्सनली डू दैट. It's quite obvious. We all of us procrastinate, but it's not good. We can't. If we procrastinate, we can't achieve our goals. So हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें पता चलता है we are procrastinating, whenever you understand it, try to be proactive. How you can overcome it. So I urge you all, do not procrastinate. Instead, be proactive. Number 5th one is हम गोल्स तो सेट कर लिए, शेड्यूल भी कर लिए एंड प्रायोरिटाइज भी कर लिए एंड प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ करेंगे तो हमें इंटरप्शंस तो आएगा ही. हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, कोई घर में गेस्ट आता है, बॉयफ्रेंड से बात करना, गर्लफ्रेंड से बात करना, फैमिली वालों से बात करना, मार्केट जाना, हेल लॉट ऑफ इंटरप्शंस आर देयर. लिस्ट इज एंडलेस. तो हमें मेक श्योर करना है कि मतलब, और हम इसे मैनेज भी नहीं कर सकते. मतलब इन सारे इंटरप्शन की मैनेज करना मुश्किल होता है, पर इसको मैनेज किया जा सकता है. हम and I'm going to tell you this in detail in the barriers of productivity. So please manage your interruption. Then I will be moving on to the next topic, which is various tools and techniques. So I'm going to talk about SMART techniques. So S stand for smart, M for measurable, R for realistic, A for achievable, T for time bound. So we have to set smart goals. If we set smart goal, our journey will be in the right direction. And as our journey will be in the right direction, we will automatically find ways on how we can achieve our journeys. So or let's say if you are a singer, and you want to be a professional singer, so set goals on how you can become a professional singer. आज ही इसी दिन ही एक पेपर लो, एक डायरी लो, उसमें गोल सेट करो कि what are your top 2 goals. I personally do that, and that's why I have a huge agenda of my life. What I'm gonna be a completely transformed person in the next few years, and that I have achieved by just jotting down my goal, and I see it every day and I push myself, Gulshan, you have to do this, and it seems very impossible, like I'm doing this. Sometimes I feel like, no, I can't do this. It's kind of like giving up, but then I feel like, Gulshan, I think of why I have started this. When I started I didn't thought that how much it will come with complications. I have to manage my work, and I have to do everything by my own. Household chores, khana pakana, morning में breakfast, lunch, काम manage करना, then content बनाना, फिर editing, and it's kind of like a huge procedure. And I am able to do this because I'm passionate about. But I personally feel like sometimes on Saturday, Sundays, I don't want to do. I really want to rest, but then I think of why I started, and it's kind of like it's keeping me driving. So you have to set goals. If you don't set goals, you will not be driving, you will not be passionate. So I urge you all to set smart goals for yourself. Number 4 technique is D4 technique. So yeah, it's very easy. D4 technique आप आराम से याद कर सकते हो, बस D और 4 याद करना है. बाकी I'll tell you D4 technique क्या होता है. तो जो D1 में होता है, we have to do the task which is urgent and important. और ये D1 होता है, हमें डिसाइड करना होगा कि when to do the task, not urgent but important. वो टास्क हमें D2 में करना है. एंड D3 में डेलीगेट द टास्क हम दूसरे को दे सकते हैं. जैसे हमारे पास बहुत सारा वर्क है, तो हम ऑफिस में हैं, तो इसको ये काम, इसको ये काम, इसको ये काम, एंड व्हेन यू हैव योर ओन वर्क, उसमें भी आप डेलीगेट कर सकते हो कि मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है. अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क, दैट इज नोन एज delegate the task, which is D3. then D4 not urgent but not important. मतलब ये जो टास्क है D4 में, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वो टास्क को डंप कर सकते हैं. So overall conclusion, D1 में do the task right now. D2 में decide the task
कि कैसे करना है। एंड D3 में डेलीगेट द टास्क टू वेरियस अदर पर्सन एंड D4 में डंप द टास्क। सो दिस इज D4 टेक्निक एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्लाई इन योर लाइफ। हर दिन सुबह सोकर उठो, सबसे पहले ये D4 टेक्निक अप्लाई करो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो चीज़ हम करें। कि अगर हमारे लिए ऑफिस का काम करना है तो प्रायोरिटाइज दैट वर्क्स। अगर हमें कुछ और काम है जैसे खाना बनाना है, उसको प्रायोरिटाइज करो। और बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वांट यू गाइस टू यूज दिस D4 टेक्निक। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यू आर गोना सी a huge change in your perspective about life, in your achieving the goal, so start applying D4 technique. Next I'm going to talk about, हम प्लान करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस। हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमें हेल लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो हम उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं हम वही कॉल्स अटेंड करें जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं। ऐसे बुलशिट या ये वो किसी रैंडम का कॉल उठा के, कंपनी वाले का फ़ोन उठा के, वो सब बंद कर दो यार। आई पर्सनली आई कीप माई फोन DND, ओनली माई डैड, माई मॉम, माई सिबलिंग्स वही फ़ोन उठा सकते हैं और कोई फ़ोन नहीं उठा सकता है। और किसी का कॉल मैं रिसीव नहीं कर सकती हूँ। और इफ़ इन केस मुझे किसी का कॉल अर्जेंट लगता है देन आई विल कॉल बैक। सो कीप योर फोन इन DND, वही कॉल उठाओ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा चीज़ जो क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क है, जैसे ऑफिस में हमारा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा, वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा, तो इन केस में ऐसा करो कि हम वर्क डेलीगेट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो हम कर सकते हैं कि जैसे हम इंटरनेट यूज़ बहुत करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैरियर टू प्रोडक्टिविटी। की अगर हम कुछ, हमारा गोल है यही अचीव करना, लेकिन अगर हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आपको पता है अगर फेसबुक एक बार चालू किया, scroll, टाइम का पता ही नहीं चलता। आई पर्सनली डू दैट समथिंग, बट देन आई रियलाइज गुलशन यू वेस्टिंग टाइम, इट्स ऑफ नो यूज। सो when realize it and stop doing that, so this is the third thing you can this is the third barrier and this is how you can overcome it। कि अपने फ़ोन में टाइम लिमिट सेट करके रख सकते हो कि इतना टाइम तक मैं फेसबुक या सोशल मीडिया चलाऊंगी, आफ्टर दैट आई एम नॉट गोना यूज़ करके। सो this you can save your time by doing all of this। So these were the few things which I have jotted down for the planning, how you can plan and how you can do better। And overall I'd like to conclude by saying that good planning ensures success। You're gonna be a whole different person when you start planning। So I urge you all to start planning and prioritizing and see the change। And I want you guys to start doing it and give me feedback, write in the comment section that you did it, and write it in the paper, send me a screenshot in the comment section, and it's gonna make me feel happy। And थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।